कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन, हमारा कोटि कोटि वंदन। भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी, भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी। नमस्कार मित्रों, भक्त कवि नरसिंह मेहता विश्वविद्यालय जूनागढ़ गुजरातना समाजशास्त्र विभाग द्वारा आयोजित UGC नेट प्रशिक्षण तालीम वर्ग में आप सर्वेनु हूँ हार्दिक स्वागत और अभिवादन करूँ छूं। मित्रों, आप जाणो छो एम प्रतिवर्ष आपणे UGC नेट और जी-स्टेट आ बंने परीक्षाओं ध्यान में राखी અને પ્રશિક્ષણનું આયોજન કરીએ છીએ અને એમાં જુદા જુદા વિષયના વિષય નિષ્ણાંતો આપણે માર્ગદર્શન આપવા માટે ઉપસ્થિત રહી છે। પ્રારંભમાં આપણે પેપર 2 સોશિયોલોજી વિભાગને ધ્યાનમાં રાખીને જ પ્રશિક્ષણમાં વિશેષ ભાર આપતા હતા, પણ શર્મા સાહેબ આપને જાણીને આનંદ થશે કે આ વર્ષે આપણી સાથે 400 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ 410 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ અત્યાર સુધીમાં રજીસ્ટર્ડ થઈ ચૂક્યા છે અને એમાં સમાજશાસ્ત્ર અને સમાજશાસ્ત્ર સિવાયના પણ મિત્રો જોડાઈ ગયા છે અને એમાં ગુજરાત બહારના પણ આઉટ ઓફ સ્ટેટના પણ કેટલાક વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી સાથે આ વખતે જોડાણા છે। ત્યારે પેપર 1 ની સાથે સાથે પેપર 2 ની સાથે સાથે પેપર 1 જેને આપણે સ્કોરિંગ પેપર કહીએ અથવા તો એમાં વિદ્યાર્થીઓને વધારે તકલીફ પડતી હોય એવા સમયને ધ્યાનમાં રાખીને પેપર 1 ના સંદર્ભમાં મેક્સિમમ લેક્ચર થાય એના માટેનું આપણે આયોજન કરી રહ્યા છીએ। ત્યારે આજે આવો જ UGC નો મહત્વનો ટોપિક જે પેપર 1 ની અંદર રિસર્ચ એપ્ટિટ્યુડ સંશોધન અભિયોગ્યતાના સંદર્ભમાં છે કે જેની અંદરથી પ્રતિ વર્ષ પહેલા પેપરની અંદર મિનિમમ 5-7 પ્રશ્નો આ સંદર્ભમાં આવતા હોય, એનાથી વધારે પણ ઓછા નહીં એવા। ત્યારે આ પેપરની તૈયારી અથવા તો આ ટોપિકની તૈયારી આપણે કઈ રીતે કરવી જોઈએ, કયા પ્રકારના પ્રશ્નો આવી શકે, કેવી રીતે તૈયારી કરવી, આ બધા અંગે માર્ગદર્શિત કરવા માટે આજે આપણી સાથે શ્રી કેકા શાસ્ત્રી કોલેજના આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર પંકજ શર્મા સાહેબ ઉપસ્થિત છે। સર, આપનું હું યુનિવર્સિટી પરિવાર અને અમારા સમગ્ર પ્રશિક્ષણના સાથી મિત્રો તરફથી હાર્દિક સ્વાગત અને અભિવાદન કરું છું। આપે જી-સ્લેટની પરીક્ષામાં પણ ખૂબ સારું એવું માર્ગદર્શન આપેલું અને એના કારણે જ કદાચ 20 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ જી-સેટમાં ખૂબ સફળતાપૂર્વક ઉત્તીર્ણ થયા છે। ત્યારે આજે પુનઃ જી-સેટ અને નેટ એ બંનેનું થોડુંક ક્રાઇટેરિયા અને થોડુંક એનું અલગ છે। ત્યારે એ સંદર્ભમાં નેટમાં રિસર્ચ એપ્ટિટ્યુડ સંશોધન અભિયોગ્યતાના સંદર્ભમાં કેવા પ્રકારના પ્રશ્નો આવી શકે, કેવી રીતે એની તૈયારી કરવી જોઈએ, કઈ બાબતોની ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ, એ અંગે આપ માર્ગદર્શિત કરશો એવી અપેક્ષા સાથે હું આપને પુનઃ આ કાર્યક્રમ અને આ શ્રેણીમાં આવકારું છું અને આપને વિનંતી કે આપ અમારા વિદ્યાર્થી મિત્રોને આ સંદર્ભમાં માર્ગદર્શિત કરો। શર્મા સાહેબ। अच्छा, तो स्क्रीन देखाय છે ક્લિયરલી? સ્ક્રીન દેખાય છે સર? યસ। ઓકે। તો જેમ ઝાલા સરે કીધું કે આ વખતે નેટની તૈયારી માટે આઉટ સ્ટેટથી બી ઘણા બધા કેન્ડિડેટ જે છે જોડાયા છે આપણી સાથે અને નેટ એ સેન્ટ્રલ લેવલની એક એક્ઝામ છે જેની અંદર હિન્દી અને ગુજરાતી બે ભાષાની અંદર તમે એની એક્ઝામ આપી શકો છો। તો આજે હું પ્રયાસ કરીશ કે આપણે ઇંગ્લિશ અને હિન્દીની અંદર જે રિસર્ચ એપ્ટિટ્યુડ છે એની થોડી ચર્ચા કરીએ અને બની શકે એટલા વધુ મુદ્દા કવર કરીએ જે તમને એક્ઝામની અંદર કામ લાગે। તો શરૂઆત કરીશું। સૌથી પહેલા सबसे पहले we are having the syllabus of research aptitude. I think you all may be aware of syllabus. You all may have seen in your
book, whatever you are referring to. So we are not getting too much in detail with the syllabus. We are starting with what is research. So uh, in day-to-day life, we all search something. आजकल क्या हो गया है कि we are searching on YouTube. तो भाई YouTube पे सर्च करो. We are searching on Google. We are searching everywhere. We are contacting our friends. We are getting information from our friends, relatives. We are searching everywhere. This is search. But when we call it a research, the research is something which is very much systematic, which is structured. Here you see the highlighted words that a research must be systematic. To make a research effective, it must be a structured and systematic inquiry. Now, how this systematic and structured inquiry works? So this utilizes the acceptable scientific methodology. So the methodology that you need to use in this particular research, they are scientific methods which are acceptable universally, and this leads to problem solving and creating new knowledge in the existing knowledge. So this is how the research is. This is what the research means. The inquiry of research is aimed at understanding a thing or phenomena or solving a problem. It is directed towards solving a problem. Now let's discuss what is this scientific method or research method. So according to Random House Dictionary, scientific method is a method in which a problem is identified. So first of all, what we need to do, we need to identify the problem. That what is the problem? Secondly, we need to collect the relevant data on this particular problem. After getting data, after identifying problem, after gathering data, collecting data, uh, we may have formulated certain hypotheses, and we need to test this hypothesis empirically. When we test hypotheses empirically, then we call them research. This is all the scientific method is: identifying the problem, collecting or gathering relevant data, framing hypothesis, testing this hypothesis empirically, and concluding about your study, your research. So this is the basic meaning of research. Many questions asked from this particular highlighted words in the previous year exam papers. Okay, when I when I am going with certain materials, certain things to discuss with you on research aptitude. So what we need to study, that is a big question. हमें क्या discuss करना चाहिए? What topics we need to cover? That is a big question. So yes, पंकज सर जी, yes sir, सर yes जी, sir. थोड़ी आवाज ऊंची है, आवाज आवाज कम आ रही है थोड़ी सी। अच्छा सर, ओके सर, वेट। स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं थोड़ा सा कि आवाज। ओके सर, अब आ रही है सर? नाउ यस, आवाज क्लियर है? हाँ हाँ जी। ओके सर, ठीक है। तो मटेरियल हमें पढ़नी कहाँ से है चीज़ें, दैट वी नीड टू सी। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए सिलेबस को गो थ्रू करना है। हमें सिलेबस पूरा का पूरा एक बार देख लेना है, कवर कर लेना है। देन अगेन वी नीड टू गो विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो पिछले कुछ सालों में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। And after identifying a pattern from these previous year questions and the syllabus, we need to study certain topics in detail and depth, which are asked continuously. The topics from these topics, the questions are continuously asked in the previous year papers. So आज मैं आपसे जो कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने वाला हूँ वो ज़्यादातर प्रीवियस ईयर की एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन से रिलेटेड है और आपके सिलेबस में से ऑब्वियसली है। Secondly, we are going to discuss the research characteristics. Again, this is important from your exam point of view. What are the research characteristics? The first one is objectivity. ऑब्जेक्टिविटी मीन्स आपका जो रिसर्च है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो किसी भी प्रीजुडाइज के साथ नहीं होना चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्रीजुडाइज। और ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, to maintain the objectivity, we need to follow certain aspects, that is procedural safeguards. हमें कुछ
प्रोसीजरल सेफगार्ड फॉलो करने हैं, कुछ स्टैंडर्डाइजेशन मेथड्स फॉलो करनी है, ऑपरेलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, एंड वी नीड टू अवॉइड दी बायस फ्रॉम दी रिसर्च। ओवरऑल कहा जाए तो हमें कंप्लीट रिकॉर्ड रखना है हमारे डेटा का। वी नीड टू मेक अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ आवर डेटा, वट एवर वी आर डूइंग स्टेप बाय स्टेप इन द रिसर्च, टू मेक इट ऑब्जेक्टिव। हमें एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करके रखनी है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है, वट एवर डेटा, वट एवर टेक्स्ट, वट एवर मेथड वी आर यूजिंग इन द रिसर्च। So objectivity is the first characteristic that we need to see. Second is reliability. आप जो रिसर्च कर रहे हो वो रिलायबल होनी चाहिए। सो हाउ वी मेजर द रिलायबिलिटी? अगर आपने रिसर्च की है 100 लोगों पे, उसके कुछ रिजल्ट्स आए हैं, फाइंडिंग्स आर देयर, अगेन आफ्टर यू आर अगेन डूइंग रिसर्च for with the same 100 people and you are getting certain findings, this both the findings should be similar, should be consistent with each other. रिलायबिलिटी को हम वेरीफाइबिलिटी भी बोलते हैं। आपने पहले जो रिसर्च की, कुछ पॉपुलेशन की, कुछ सैंपल्स पे की, आपके जो रिजल्ट्स आए, अगर सेम रिसर्च वापस की जाए तो जो रिजल्ट्स हैं, जो फाइंडिंग्स हैं, वो सेम आनी चाहिए। वी कॉल इट वेरीफाइबिलिटी, वी कॉल इट रिलायबिलिटी। एंड now the third characteristic, okay, this third one is very important, validity. यहाँ से काफी क्वेश्चंस नेट की एग्जाम्स में, जीसेट की एग्जाम्स में पूछे गए हैं, हमारी जो स्टेट लेवल की एग्जाम होती है उसमें भी देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। सो वैलिडिटी रिफर्स टू द एक्यूरेसी ऑफ प्रोसीजर, जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और जो टेस्ट, स्टेटिस्टिकल टेस्ट हम लोग यूज करते हैं, ये इनकी वैलिडिटी, इनकी एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज टॉकिंग अबाउट द accuracy of research instruments, procedures, and the tests which are used in the research. अब validity के बहुत सारे types होते हैं. There are so many types of validity. First of all, we can say there is an internal validity. This internal validity is mainly used for causal research. When there is higher internal validity, the researcher can establish a better relationship between the cause and effect variables. So the first is, સર yes sir, yes ઓકે sir, સર yes sir. કદાચ તમારી સિસ્ટમમાં વોલ્યુમ ધીમું હોઈ શકે એવું જો એકવાર ચેક કરી લ્યો કદાચ અને સર હું હેન્ડ્સથી કાઢીને એક વખત ટ્રાય કરી જોઉં છું, કદાચ અને પેલો પડઘા પડતા હોય ને એવો અવાજ આવે છે. हेलो, હાજી यस सर। અને अब कैसा है सर, आवाज आ रहा है क्लियर? आवाज आ रही है, कभी इको भी कभी कभी आ रही है शायद कुछ। ओके, तो सर आई थिंक मैं लैपटॉप को नियर बाय ही यूज कर रहा हूँ और आई एम आल्सो हैविंग द हेल्प विद द माइक। तो लेट मी अगेन स्टार्ट ऐसा ओके 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 सर स्टार्ट करके देखता हूँ, है ना सर? ओके सर स्टार्ट करिए सर। हेलो हेलो, हाँ सर हाँ जी अब आपको क्लियर? हाँ जी आवाज सर ये हैंडफ्री है, इससे तो ज़्यादा क्या ओके कर सकते हैं, है ओके ना? ओके ओके कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम ओके सर, ओके सर डन। टीम हो रहा है? हाँ जी ओके, स्टार्ट है वो तो स्टार्ट लेट मी सर अगेन देखते हैं। है ओके सर।
Okay, screen is clear. Yes, yes. Okay, okay. जी, Let me जी. come. Okay, let me come to the research characteristics. Okay, we are discussing the research characteristics. First one is the objectivity that we have discussed. That the objectivity is related with what the objectivity is related with the yes. Yes, I think I'm my voice is clear to all of you. आवाज जी, सबको जी, क्लियर आ रही जी, है? स्टूडेंट्स को जी, सर आ रही है? जी, जी. Okay, okay, sir. So objectivity means that the research should be free from any kind of prejudice, and we have discussed कि complete record आपके डेटा का रखना है, एक यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट आपकी जो मेथड्स हैं, आपकी जो पॉलिसीज हैं, आप जो टेस्ट यूज करते हो, आप दूसरी कलेक्शन मेथड यूज करते हो, दे शुड बी यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट throughout your research. So this makes the objectivity. Then there are biases. The research should be free from all kind of biases. This makes your research more objective. Secondly, we have discussed the reliability. So reliability is all about the verifiability. We also call it verifiability. अगर आपने एक बार किसी रिसर्च की है और वापस सेम रिसर्च की जाती है, तो आपके जो रिजल्ट्स हैं, जो फाइंडिंग्स हैं, दे शुड बी सिमिलर, दे शुड बी मैचिंग विद ईच अदर. दिस इज कॉल्ड द रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च कि यस आपकी रिसर्च रिलायबल है. ऐसा नहीं है कि बार बार रिसर्च कर रहे हैं हम लोग एंड द रिजल्ट्स आर वेरिंग ईच टाइम. The third is validity that we are discussing. The validity is related with the accuracy. Accuracy of what? So accuracy of procedures, accuracy of instruments, tools, tests which are used in the research. First हमने देखा internal validity. Secondly, now we are going to discuss the external validity. The external validity is related with the generalizability. कि आपकी जो findings हैं वो आपने कुछ एक sample लेके की है, उसकी जो फाइंडिंग्स है वो कितनी जनरलाइजेबल है टू द होल population. This is called the external validity. Then there is the third one. Then there is a third one, that is the face validity. This is uh, this is to evaluate that survey and questionnaires measures what they are supposed to measure. So you have designed some survey and questionnaires. They are measuring what you are with the purpose. You have prepared that survey or the questionnaire. This is called the face validity. This is generally used in surveys to design questionnaires. Then there is a content validity. The content validity measures all aspects of the whole concept of the whole research. Then there is criteria validity. In criterion validity, there is three: predictive validity, concurrent validity, and post-predictive validity. So predictive validity, this indicates whether the test accurately predicts व्हाट इट इज सपोज टू प्रिडिक्ट. हमने जो चीज प्रिडिक्ट करने के लिए ये टेस्ट अप्लाई किया था वो प्रॉपर्ली प्रिडिक्ट कर रहा है. दैट इज प्रिडिक्टिव वैलिडिटी. concurrent validity, now see within example, suppose that there are students who have qualified net exam. Now to become an assistant professor, to become an assistant professor from the net exam, they are supposed to give two tests. Two phases are there, two exams are there. The first one is written exam, and the second one is interview. You say the second one is interview, or you can say the demo session or whatever. So after all the candidates have qualified NET exam, now to become an assistant professor, they need to qualify two phases. The first is written exam, and the second is interview or the demo. So if the candidate clears both the things with the qualifies both the things. If a candidate has qualified written exam with good marks, and if a candidate has qualified interview and demo both with the good marks, then we call it concurrent validity, something which is tested by step by step. So this kind of validity we call it concurrent validity. Then post-predictive validity, this is nothing but this is the degree to which college admission test scores of a student predicts the final year's percentage of a student. If while taking admission
in a college, a student has scored 70% marks, and we ensure that in the final year he may be going to score around 70% marks. So this is nothing but this is what post-dictive validity. So these are certain types of validity that we have discussed here. There are so many more in the validity section. It is again, there are so many parts that we can discuss, but for now, we are discussing these many types of validity. Moving further, okay, we are done with the objectivity, we are done with the reliability, validity. Now moving with the fourth one, that is accuracy. It is very much obvious that in research, the accuracy of everything must be there. The fifth one is credibility. Credibility means टेकिंग थिंग्स फ्रॉम द बेस्ट सोर्स. अगर हम रिसर्च कर रहे हैं, हमें कुछ रिसर्च पेपर्स कलेक्ट करने हैं, हमें लिटरेचर रिव्यू करना है या हमें डेटा कलेक्ट करना है, देन वी आर फाइंडिंग द बेस्ट सोर्स फॉर इट. अगर रिसर्च पेपर लेने हैं तो स्कोपस डेटा बेस से ही लेना है. दैट इज वेरी मच स्टैंडर्ड. एबीडीसी लिस्टेड जर्नल्स में ही से ही पेपर लेने हैं. सो दिस इज डिफाइंड विद क्रेडिबिलिटी कि आप जो भी चीज कर रहे हो, दे आर बेस्ट. You are using the best things. The sixth characteristics is generalizability. Simply this means the generalizability of your findings. Whatever research you are finding, it is generalizable to how much populations. Then empirical research is the seventh characteristic. Uh, this states the research should be based on real experience. It should be based on direct experience or the observation of a researcher. It should be real. This is empirically tested. The eighth one is the systematic. Yes, again, this way I have discussed in the earlier stage in the meaning that a research must be systematic, step by step, not unsystematic, not just searching, but researching step by step, following certain steps, methods. The ninth is controlled factors. Okay. Uh, Suppose there are two variables. One is passing in exam. That is variable containing pass and fail, two things. And the dependent. This is the dependent variable. Whether a student going to pass or fail in exam. In the other side, there is an independent variable. We need to test that how much time spent by a student for studying, how much time spent by a student is impacting its results, whether he is going to pass or fail. So this is a research. This is we are going to study. We also call it cause. ये जो independent variable है, इसे हम cause भी बोलते हैं, और जो dependent variable है, इसे हम लोग effect भी बोलते हैं. We call it causal effect. Research है. लेकिन इट इज वेरी मच ऑब्वियस कि स्टूडेंट पास हो रहा है या फेल हो रहा है, उसको सिर्फ और सिर्फ वो कितना टाइम पढ़ रहा है, दैट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट. देयर आर सो मेनी मोर फैक्टर्स आल्सो. और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे. स्टूडेंट के प्रीवियस मार्क्स, पिछले सालों से वो कितना स्कोर कर रहा है. अगर कोई स्टूडेंट 80 स्कोर कर रहा है तो इट इज ऑब्वियस कि टाइम शायद कम स्पेंड किया हो, बट ही कैन स्कोर अ गुड मार्क्स. So there are so many more factors. अच्छा, एग्जाम में कॉपी करते हैं, that is again one factor. So there are so many factors which can affect the results of the students, whether he is going to pass or fail. But here our study, हमारा research क्या है? हमारा research है we need to test कि time spent की impact pass और fail पे कितनी हो रही है. So here we need to control certain variables. We need to control certain variables. तो जो वेरिएबल हमारी स्टडी का पार्ट नहीं है, फॉर एन एग्जांपल स्टूडेंट के प्रीवियस मार्क्स, प्रीवियस एग्जाम के मार्क्स, और कुछ ऐसे वेरिएबल जो हमारी स्टडी का पार्ट नहीं है, हमारी स्टडी का पार्ट है टाइम स्पेंड. सो वी आर गोइंग टू कंट्रोल दीज अदर वेरिएबल्स which are majorly influencing our dependent variables. This is whether a student is going to pass an exam or not. So this is called controlling the factors. Then we are not doing it psychological. Yes, logical. आपका जो रिसर्च है वो एक लॉजिक के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, एक प्रॉपर रीजनिंग होनी चाहिए रिसर्च के अंदर. दिस इज अ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक.
and replicable, yes, the replicable and the reliability both are almost similar. Replicable भी यही बोलता है कि आपने जो रिसर्च की है, अगर सिमिलर रिसर्च सिमिलर पॉपुलेशन के साथ अगर कोई दूसरा रिसर्चर कर रहा है, whether it is replicating the result or not. If it is replicating, it is a good research. So a research must be replicable. So these are the basic characteristics of research. So I hope it is clear to all of you. अगर कुछ चीजें clear ना हो, आपको ना समझ में आए, you can ask me in the your comment box, or you can further read about these points. Next, we are moving with the steps of research. What are the steps that we need to follow for the research? Steps of research में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा points cover करने का try किया है, जहाँ पे आपको most of चीजें समझ में आ जाए कि हमारे रिसर्च के जो मेजर टॉपिक्स हैं वो स्टेप्स ऑफ रिसर्च में ही कवर हो जाए इस फिल्म। So the first step is formulation of the research problem. Again, this is a very important step. This is the first step, that is formulation of research problem. Here, firstly, what the researcher do? Researcher identifies the broad area and the sub area where he needs to conduct the research, and then selects his interest area where he is going to work in detail. Indeed, he is going to do the research. Then he go for the literature review. वो उसका जो इंटरेस्ट एरिया है उसके ऊपर डिटेल स्टडी करता है, लिटरेचर्स निकालता है, जितनी भी पुरानी स्टडी हुई है उन सबकी डिटेल्स निकालता है, एंड देन ही आइडेंटिफाइज द गैप कि भाई ये मेरा इंटरेस्ट एरिया था, इसके अंदर these are the things which are done by the earlier researcher or some companies, but yes, still this kind of research are not done. So something which is not done in your interest area, that is all about identifying the gap. आप जो गैप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि भाई इस तरीके का काम, इस तरीके की रिसर्च इस टॉपिक पे नहीं हुई है, then you frame certain hypothesis, you identify some variables. जो स्टडी हम लोग करते हैं उसमें किस तरीके के वेरिएबल है, सम डिपेंडेंट वेरिएबल, we will discuss later on these things also. आप हाइपोथेसिस फ्रेम करते हो बेस्ड ऑन अगेन लिटरेचर, हाइपोथेसिस आल्सो बेस्ड ऑन लिटरेचर, और इस हाइपोथेसिस और गैप्स के बेस पे यू स्टेट, यू राइट certain objectives of your dissertation, thesis, or whatever research project you are conducting. So this is the whole process, and it goes like a funnel, formulating research problem. अब कुछ टॉपिक जो भी फॉर्मुलेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर से थे, जिसे हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे. सो फर्स्ट लेट्स सी व्हाट हाउ द लिटरेचर रिव्यू हेल्प्स. तो सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू एक जो रिसर्चर होता है उसका नॉलेज बढ़ाता है, इट ब्रॉडन्स द नॉलेज ऑफ रिसर्चर. सेकेंडली, ये आपको रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस फ्रेम करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है. अगर आप रिगुलर लिटरेचर रिव्यू करोगे, यू कैन आइडेंटिफाई गुड रिसर्च क्वेश्चंस, you can identify the problems, you can frame the hypothesis, and you can find the gap in the research. It also improves your research methodology. If you are using any kind of statistics-based or method, so why you are using this method? That is the question. कि आप यही method, यही case क्यों use कर रहे हो? That you need to write in your methodology part. So you can give the reference from the literature that the earlier researcher has done these kind of research and they have used this particular case. So here I am going to use this particular case or method, whatever you can write in here in the research methodology. So आपका लिटरेचर रिव्यू जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी इंप्रूव होगी. आप जो फाइंडिंग्स लिखोगे तो उन फाइंडिंग्स को आप कॉन्टेक्चुअलाइज कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो विद द प्रीवियस फाइंडिंग्स, विद द एग्जिस्टिंग लिटरेचर. This will make value addition in your research. So this is how the literature review helps. Secondly, आजकल कैसा हो गया है कि ये सॉफ्टवेयर जो है they are very much popular. डेटा एनालिसिस के लिए, रेफरेंसिंग के लिए, साइटेशन के लिए काफ़ी जगह पे सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं. एंड आई हैव सीन इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दैट many times they ask certain questions related to the software, जो कि आई थिंक स्टूडेंट जो कि एमकॉम के स्टूडेंट है या फिर कोई भी मास्टर डिग्री जिन्होंने की है,
जिन्हें ज्यादातर सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पता होता, बिकॉज दे आर नॉट प्रैक्टिकली वर्किंग इन द रिसर्च फील्ड. So here, if certain question can be asked from the software, I have identified two. First is Mendeley and second is Zotero. So Mendeley and Zotero, these are the tools which help you in doing your literature review. These help you in collecting proper research papers, citing your sources properly, referencing. So ये जो सॉफ्टवेयर है Mendeley and Zotero, these are the two main popular software. और भी काफी सॉफ्टवेयर हैं. There is EndNote is also there. So many software are there. लेकिन जो popular software है, these are these two, Mendeley and Zotero, जो कि यूज किए जाते हैं रेफरेंसिंग के लिए, साइटेशंस के लिए. और आपके जो सोर्सेज है, आपने हजारों जगह से डेटा कलेक्ट किया है. यू हैव आइडेंटिफाइड 300 रिसर्च पेपर. कहाँ पे रखना है इतना सारा डेटा? सो दिस सॉफ्टवेयर इज गोइंग टू मैनेज your citations, your referencing, your collected information, and your whole sources. So this is all about the literature review. Nextly, formulating the objective. So objective, so it is going to be defined on the basis of your hypothesis, on the basis of your gap, on the basis of your research questions. So आपके objective, आपके research question, hypothesis के consistent होने चाहिए. If you are making one main objective, then there can be certain sub-objectives. These sub-objectives should not be related to each other. They all must be the part of the main objective, but they must not be related with each other. Second, identifying research variables. तो हम literature review करेंगे, तो हम variables भी identify करते हैं, that what are the dependent and independent variables. Earlier जैसे हमने discuss किया, there are certain dependent variables and independent variables. Dependent variable को हम लोग effectable बोलते हैं, और independent variable को we call it cause. Then there is identifying research variables and measuring scales. Now yes, we have seen the variables, we are dependent or independent. Now these dependent and independent variables are in which scale? This is very important. You need to identify the skills. Scaling में से काफी questions exams में पूछे जाते हैं. The variable which are having only name, जिसमें सिर्फ नाम है, there is nothing more. The variables with only name, a label, or we can say the category, these are called nominal variables. Secondly, the variables having certain kind of ordering. For an example, your educational qualifications, SSC, HSC, bachelor's, master's. So this is an order. Secondly, if an organization, there are people working, we can say salesman is there, sales officer is there, then sales manager is there. So these are the three categories in your study, and these three categories, we can call it ordinal data category. This category is in ordinal data. It is moving upward. Salesman say sales officer, and from sales officer towards the sales manager. There is a particular ordering in the categories in the data. So your variable can be nominal, your variable can be ordinal if there is an ordering in your data, in your variable. The third is interval variable, interval data. So the variables having meaningful and equal difference. Let's take an example, the temperature. So the temperature between 80 and 70. Okay, there is an interval. Temperature 40 to 50. 40 to 50. Now the difference between 80 to 70 and 40 to 50 is equal. So there is an equal and meaningful difference. When there is an equal and meaningful difference between the two values of a variable, then we call it an interval variable. And again, the zero is not the actual zero here, not actual zero. In interval data, in internal variable, the zero is not actual zero. For an example, if I call the temperature is zero, it doesn't mean that there is no temperature. It doesn't mean that there is no temperature. Yes, there is a temperature,
but this zero is not actual zero in interval variable. Secondly, there is the fourth ratio variable. Yes, the ratio variable contains all the properties which are there in nominal, ordinal, interval. इंटरवल डेटा की इंटरवल वेरिएबल की सारी क्वालिटीज सारे कैरेक्टरिस्टिक्स रेशियो वेरिएबल में रेशियो डेटा के अंदर होते हैं बट देयर इज वन मोर एडिशन दैट सेज here the zero is the actual zero. For an example, the marks scored by a student. Student ने एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स स्कोर किए. So when we call zero marks, it means this is the actual zero. It doesn't mean that there is something is there. No, there is nothing. So when there is an actual zero, we call it ratio variable. When there is no actual, we call it pseudo zero. We call it interval variable. So these are the measurement skills. आपने रिसर्च क्वेश्चन आइडेंटिफाई किए, आपने हाइपोथेसिस फ्रेम की, आपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए, आपने कुछ वेरिएबल्स निकाले, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एंड नाउ यू आर क्लासिफाइंग दीज वेरिएबल्स into some measurement scale. This is nominal, ordinal, interval, and ratio. Let's move towards the next. Then there is identifying research variables in measurement scale. Again, under these same heading, we will discuss the attitudinal scales. Attitudinal scales are also known as unidimensional scales. There are three types of unidimensional scales. Okay, scale, strongly positive, strongly negative, strongly agree से लेके strongly disagree तक. You can see here very unsatisfied से लेके very satisfied. So this is a scale. This is basically we call it a Likert scale. Likert scale में हर एक statement को if we are asking number of statements 1, 2, 3, 4, if we are asking number of questions, number of statements to the respondent, so हर एक statement को we give equal importance, equal weightage. Then we use the Likert scale. While in Thurster scale, the weightage given to each statement is different. जो ज़्यादा important है उसे ज़्यादा weight दिए जाते हैं. The statement with the ones less importance are given less weight. Then the Goodman scale is used for identifying the positive sentiments and negative sides of a particular person regarding the particular statement. Then let's see how the hypotheses are formulated and what are the two types of hypotheses. Yes, so there are two types of hypotheses. First one is null, second is alternative. The null hypothesis say that there is no difference in parameters. There is no difference, or we can say there is no impact, there is no, everything is nil. We use the word nil, null. That nothing is there between two variables. And second is alternative hypothesis, which is totally opposite of it. Let's take an example. Okay, we have discussed the student pass हो रहा है या fail हो रहा है. We'll take again the same example. Time spent, student ने कितना time spent किया है study करने में, उसकी impact we are checking on whether the student is going to pass or fail. So now here in this kind of study we frame null hypothesis as there is no significant impact of time spent on students result. स्टूडेंट के रिजल्ट पे वो कितना टाइम स्पेंड करता है उसकी कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं होगी. दिस इज द नल हाइपोथेसिस. वी विल अज्यूम देयर इज नथिंग नील एंड देन वी विल गोइंग टू टेस्ट इट एम्पिरिकली. हम लोग इसको टेस्ट करेंगे, हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे एंड विद ऑब्जेक्टिविटी वी विल टेस्ट एंड वी विल प्रूव whether this is right or wrong, whether the null hypothesis is going to be accepted or the alternative hypothesis is going to be accepted. Alternative hypothesis null hypothesis के totally contradiction में होगी. That is, time spent by student is having significant impact on the results. Next is the next step of research. We are done with the formulation of research problems. We have discussed in detail certain aspects with respect to literature review, measurement scales, the dependent independent variables, and the training hypothesis. Now let's see the research design. How to prepare the research design. So research design basically involves
objective of study, selection of method for the data collection, sampling designs, tools for data collection, and data analysis, whether it is qualitative or quantitative. There are basically three types of research designs. The first is exploratory research design. कब use की जाएगी exploratory design? So when the groundwork is not properly done on a particular topic. If the groundwork is not properly done, कोई एक topic है, कोई area है, जहाँ पे groundwork भी अभी तक नहीं हुआ है, और problems are not much clear, problems are unclear, then in this case we are going to use exploratory research. These kind of questions are asked in that exam earlier also. Second is descriptive research. Descriptive research is all about describing the phenomena, situation, or the population. Phenomena means कोई घटना. So describing whether the phenomena, situation, or population in a systematic manner. When you want to do this, you use descriptive research, causal research. तो जिसकी हमने अभी discussion की, the time span and the impact on the result. So this is all about the causal research, where there are two or more than two variables, where there is something which is cause and the another one is effect. Then there is number of contexts, or we can say there are types of data. We can classify data on the basis of cross-sectional, time series and the panel data. Cross-sectional data किसे बोलेंगे? तो जनरली जो सर्वे डेटा होता है, सर्वे डेटा, or we can say a data collected during a particular time. 2011 में जो डेटा कलेक्ट किया गया about some respondents. So this is what, this is cross sectional data. Okay. अभी 2022 में इसको हटा देते हैं. 2022 में in the month of January we are conducting a survey. We are asking 1,000 respondents about the vaccinations impact on their health. So this is what, this is, you are going to get the cross sectional data. So generally the survey data are called cross sectional data. Second is time series data, also called longitudinal data. Time series data means measuring particular event, particular phenomena, or you can say particular things over a period of time. I have measured profit. Let's take an example. I am going to measure the profit. Profit of what? Profit of, let's say, HUL company. Profit of HUL company over the period of time. What profit are in the 2011, 2012, 2013, and so on. You can say up to 2022. What is the amount of profit they had up to the March? So this is studying something over a period of time. We call it time series data. Generally जो stock market का data होता है, scripts का data होता है, और ये जो कंपनियों का data होता है जो over a period of time study किया जाता है. If you are comparing GDP, national income, inflation, these things over a period of time, these are the time series data. Then there is the panel data. Panel data is nothing but it is a mix up of both cross section and time series. There is more than one cross section. It means there is more than one country. Let's take an example of this GDP. If we are collecting data on GDP for the year 2011, 12, 13, and so on, and we are comparing the GDP of India, USA, and UK. So this is what, this is a panel. This is a panel. We call it a panel data. When there is more than one cross section and we have collected data over a period of time, when the both things are there, we call it panel data. These are the three basic types of data that can help you in research. Okay, I have put in a picture. Let's see. This is regarding the cause and effect relationship. I think you all have understood what is cause and effect relationship. If you have watched, आपने अगर मूवी देखी हो, तो जब ये ऋतिक रोशन की प्रेस करता है, then there is the effect.
कहीं पे कुछ सिग्नल्स जाते हैं. So the cause is pressing the key and the effect is some signals are going over the uh, on another planet. So this is what the cause and effect. There is a cause and effect relationship. Now there is one more concept with respect to cause and effect relationship. We call it Granger causality. We call it Granger causality. अच्छा, ओके, यू आर प्रेसिंग द की नाउ. आपने आज की प्रेस की, लेकिन 3 दिन बाद एलियन आपके प्लानेट के ऊपर आ गए. अगेन कुछ सालों बाद, आफ्टर सम इयर्स, आपने अगेन की प्रेस की, 3 दिन बाद एलियन आ गए. So this is called Granger causality, that the previous values or the past values of another variable is impacting or it is affecting your present values. So this is we call it Granger causality. This is an example of cause and effect relationship only, but there is one more causal relationship that is called, we call it Granger causality, which is related with the past values. Then we can also divide the research design on the basis of nature of investigation. We can call it experimental research design and non-experimental research design. Experimental research design में क्या किया जाता है? We manipulate the independent variable. मतलब independent variable. Okay. Uh, Let me take an example. Let me make a group. There is one group. There is another group. यहाँ पे कुछ there are 10 students. यहाँ पे there are 10 students. Okay. So we call it experimental group. इसको हम लोग experimental group बोलेंगे. इसको हम लोग control group बोलेंगे, CD. EG and CD, experimental group, control group. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था दैट इज टाइम स्पेंड, उसको हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे. दैट इफ अ स्टूडेंट इज स्पेंडिंग 10 आवर्स, 11 आवर्स, 5 आवर्स, 6 आवर्स, 4 आवर्स, 3 आवर्स, तो इसको इंक्रीज डिक्रीज करेंगे. एंड वी विल सी व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन देयर नॉलेज. दैट इज हम लोग देखते हैं व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन दिस. सेकेंडली एक ग्रुप है कंट्रोल ग्रुप, जहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया. वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग एंड वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द रिजल्ट्स एंड देन वी आर गोइंग टू कंपेयर दिस रिजल्ट्स. एक हमने कुछ भी इम्पैक्ट, कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं किया इंडिपेंडेंट वेरिएबल में. सेकेंडली यहाँ पे हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ मैनिपुलेशन और वी कैन कॉल इट इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं. देन व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन अवर डिपेंडेंट वेरिएबल और ऑन अवर सब्जेक्ट, बिकॉज इन एक्सपेरिमेंट्स में हम लोग उन्हें सब्जेक्ट बोलते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट दी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन. नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में कोई भी कंट्रोल ग्रुप नहीं होता, किसी भी तरह का इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन नहीं किया जाता. इट इज प्योरली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन. द रिसर्च डिजाइन वी कैन ऑल्सो से एक्शन रिसर्च, जो इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए की जाती है रिसर्च, वी कॉल इट एक्शन रिसर्च. ऐसी रिसर्च जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉपुलेशन के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करने के लिए की जाती है, उनकी एज, उनके क्वालिफिकेशंस एंड देयर मैरिटल स्टेटस. देन वी कॉल इट कोहॉर्ट स्टडीज. and then there is one more that is called placebo research design. Okay, let's take an example here. One group, second group, third group. एक ग्रुप है जहाँ पे हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. वी आर मेकिंग सर्टेन चेंजेस, सर्टेन इंक्रीज डिक्रीज. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल. हमने 10 जने हैं, उनको वैक्सीन दी. वी हैव गिवन द वैक्सीन ऑफ कोविड-19 टू द 10 पीपल. सेकेंड ग्रुप है जहाँ पे हमने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दी है, वी कॉल इट नो ट्रीटमेंट ग्रुप. हमने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दी है. दे आर 10 पीपल एज इट इज, नो वैक्सीन. दूसरे एक और ग्रुप है 10 जनों का, वी कॉल इट अ प्लेसिबो ग्रुप और वी कॉल इट प्लेसिबो इफेक्ट. लेट्स सी व्हाट इज दिस. इन 10 जनों को वी आर गोइंग टू गिव एन इंजेक्शन. 10 जनों को वी आर गोइंग टू गिव एन इंजेक्शन. हम उन्हें ऐसा लगेगा कि हमने उसको वैक्सीन दी है, बट वी आर नॉट गिविंग द वैक्सीन टू देम. हमने कुछ पानी या नॉर्मल ग्लूकोज का इंजेक्शन उन्हें दिया है. And they are thinking that they got vaccinated. This is called placebo group. So in placebo design, you have treatment group, no treatment group, and placebo group, and you compare the results of all these three groups.
this called placebo research design. Okay. In steps of research, we are done with formulating research problems, preparing the research design, developing data collection instruments. Let's go little bit quickly. I think you may have heard of these certain things. Developing data collection instruments. So data collect कहाँ से करना है? You can collect the primary data. We call it first hand data. पहली बार collect किया हुआ data by the researcher. You can go with the secondary data. We call it second hand data. That is already collected by someone else, and we are going to use these data in our study. Then we can divide this data into the qualitative data. The qualitative data is also called the subjective data. We can also see quantitative data. Quantitative data is called objective data. Then there are the sources or methods of data collections. You are having primary sources, secondary sources. Primary data you can collect through the observation, survey, code, mail question. I think you all have read about this, so I'm not going into much details of this. Secondary sources of data are financial reports या कोई भी ऑलरेडी पब्लिश रिपोर्ट्स है, मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर्स है, जर्नल्स है, या फिर इंटरनेट है, बुक है, यहाँ से कलेक्ट करते हो. These are the secondary sources of data. आप जब आपका डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट डेवलप कर रहे हो, देन यू नीड टू सी वेदर यू नीड टू कलेक्ट दी क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा. इफ यू आर गोइंग फॉर द क्वालिटेटिव डेटा, तो क्वालिटेटिव डेटा में यू नीड टू आस्क द ओपन एंडेड क्वेश्चन मोर एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन लेस. आपको अगर क्वांटिटेटिव डेटा चाहिए, ऑब्जेक्टिव डेटा चाहिए ज्यादा से ज्यादा, देन यू कैन गो विद द क्लोज एंडेड क्वेश्चन मोर इन योर क्वेश्चन. Then let's discuss sampling techniques. Basically, we can divide the sampling techniques into the two parts. One is probability sampling, another is non-probability sampling. Okay, when to use probability sampling? So when the total population is known, जब हमें पता है कि भाई हमारे स्टडी की total population क्या है, we are going to use probability sampling. And when the total population is unknown, we are going to use non-probability sampling. So in probability sampling, there are certain methods. There are basically 5 sampling methods. We are discussing in very brief, one by one. The first is random sampling method. Randomly एक पूरे ग्रुप में से, पॉपुलेशन में से आपने कुछ रिस्पोंडेंट्स को सिलेक्ट कर लिया. सी दिस द ग्रुप, आपने रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट कर लिया. So this is called random sampling. यहाँ पे हर एक सैंपल के, हर एक रिस्पोंडेंट के सिलेक्ट होने के इक्वल चांसेस होते हैं, इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है. सेकेंड इज सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, जहाँ पे आप एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद या फिर एक सिस्टम एस्टैब्लिश करने के बाद डेटा कलेक्ट करते हो. यू कैन सी हियर, यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर कि हर 2 बंदे छोड़ के तीसरा बंदा हमारे सैंपल में आ रहा है. फर्स्ट हमने सेकेंड लिया, थर्ड फोर्थ को छोड़ा, फिर पूरा 6 7 छोड़ा, 1 लिया. सो यू एस्टैब्लिश अ सिस्टम. आप ऐसा सिस्टम एस्टैब्लिश कर सकते हो कि भाई 11 21 31 इस सीरीज में जो जो सैंपल्स आ रहे हैं, वी आर गोइंग टू कलेक्ट ऑल ऑफ देम. दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक सैंपलिंग. देन देयर इज स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग. यहाँ पे हियर द रिसर्चर डिवाइड्स the whole group into the subgroups. See here, the first subgroup, second subgroup, third subgroup and fourth subgroup. पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन है उसको कुछ सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है based on their characteristics. That characteristics can be their race, gender, educational qualifications or something else. So कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हमने पूरी पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया अलग अलग सब ग्रुप्स में. एंड नाउ फ्रॉम ईच ग्रुप वी विल रैंडमली और सिस्टमेटिकली सिलेक्ट सर्टेन रिस्पोंडेंट्स एज अवर सैंपल. दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग. और यहाँ पे ये जो एक सब ग्रुप है, ईच सब ग्रुप इज नोन एज स्टेटा. देन देयर इज क्लस्टरल सैंपलिंग. Here the researcher divides the whole population into the clusters. Now what is cluster? So cluster is again a group. These are the groups. But these groups are homogeneous
homogeneous between and heterogeneous within. अभी ऐसे क्वेश्चन इस बार पूछे हुए हैं that whether the clusters are homogeneous between or not. Cluster. So cluster क्या होते हैं? The one group, second group, third group, fourth group, fifth group. मान लेते हैं हमने पांच स्कूल सिलेक्ट की. So these 5 schools are homogeneous. All the 5 are schools. पांचों ग्रुप में मेल्स are there, females are there, students are there. So these are, we call them cluster. And then we will select one or two from these clusters. One or two clusters. हमने एक स्कूल सिलेक्ट की, 2 स्कूल सिलेक्ट की. So this is called clusteral sampling. So remember again, in clusteral sampling, the groups are homogeneous. They are homogeneous between and heterogeneous within. And in case of theta, it is vice versa. It is opposite. Next is multi-stage sampling. In multi-stage sampling, we can see here that suppose there is a country. In that particular country, there are certain states, and we have selected any 3 states from there. In each state, there are so many cities, and we have selected any 2 cities from there. So it is stage wise. It is going stage wise. So we are doing sampling stage wise. Again, from each city, in each city there are so many colleges, and we are selecting only a single college from each city we have selected. So, and now from these colleges also we are selecting certain respondents under our study, under our research. So this is called multi-stage sampling. Then there is quota sampling. Yes, now we are moving into non-probability. Non-probability quota sampling is a method under non-probability sampling method. Yes, when the total population is unknown, but when quota sampling is more suitable, when it is more suitable, so when the researcher want to focus on a particular group, मुझे CA के पास से ही responses चाहिए. I want the responses from the CA only. I want the responses from the research scholars only. I want the responses from the bachelor students only. So when a researcher is interested or interested in focusing on a particular group, we use this quota sampling method. Here the researcher select a sample group to represent some specific characteristics of the population, as we have discussed. The chartered accountant में से कुछ chartered accountants we select. Then there is convenience sampling. Convenience sampling मतलब हमारी convenience के हिसाब से, see here the researcher के जो पास में है उसको आसानी से जिन लोगों से डेटा मिल जाएगा उनसे रिसर्चर डेटा कलेक्ट करेगा. because it's convenient sampling. This is also known as lab sampling, accidental sampling, or opportunity sampling. You should remember these names. They may be asked in your exam. Then there is judgmental sampling. This is a part of non-probability sampling. Judgmental sampling. This is the researcher. Researcher decide करेगा, वो judge करेगा कि कौन सा respondent suitable है मेरी study के लिए. This respondent is more suitable, and accordingly he is going to select. So researcher अपनी judgment के base पे, अपने study के purpose के base पे select करेगा respondent को. We call it judgmental sampling, इसे purposive sampling, selective sampling और subjective sampling भी कहा जाता है. Then there is snowball sampling. Snowball sampling कब यूज की जाती है? When it is more suitable. तो कुछ सैंपल्स ऐसे होते हैं जिनमें रेयर ट्रैक्स होते हैं, कुछ चीजें रेयर होती हैं. जैसे हमने अभी देखा, for an we need to collect data from the let's say IAS. जो IAS ऑफिसर्स हैं उनसे डेटा चाहिए. तो IAS आपको ऐसे कहीं पे भी मिल नहीं जाएंगे. This is very rare to collect data. The people who have qualified UPSC exam. So what you will do? आप कुछ respondents को select करोगे और आप उन्हें बोलोगे that you give the reference and you refer the other respondents, और ऐसे ये चैन जो है बनती जाएगी एक के बाद एक. जनरली अगर मैं व्हाट्सएप पे कोई क्वेश्चन स्प्रेड करता हूँ
10 जनों को, वो 10 जने दूसरे 50 जनों को भेजते हैं सेम, again the 50 students are going to spread the questionnaire to many more students, then this is nothing but this is the chain, this is snowball. स्नोबॉल क्यों बोलते हैं? एक छोटा सा स्नो जब स्नो के पहाड़ से गिरता है तो नीचे आते आते वो बहुत बड़ा हो जाता है. इन द सिमिलर वे I have sended it to only 2 or 10 people, and at the end it is going to be a very large size, a large data. इसे हम लोग चैन रेफरल सैम्पलिंग भी कहते हैं. Let's move with the next, that is writing a research proposal. Okay, there is not much more in need to be discussed in this, so we are skipping this. Okay, collecting data we have discussed, primary, secondary. Yes, let's discuss the how to analyze the data. प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डेटा. आपने जो डेटा कलेक्ट किया, ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. हमने रिसर्च क्वेश्चंस देखे, ब्रॉड एरिया था, नैरो एरिया आया, सब एरिया आया, इंटरेस्ट एरिया आया, वी हैव आइडेंटिफाइड रिसर्च क्वेश्चंस, हाइपोथेसिस फ्रेम की, ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम किए, वेरिएबल्स आइडेंटिफाई किए, डेटा कलेक्ट किया. डेटा को अब एडिट करना है, वी नीड टू एडिट द डेटा. कुछ रिस्पॉन्सेज ऐसे होते हैं जिनमें मिसिंग डेटा होता है, रॉन्ग डेटा होता है, तो वी नीड टू डू द एडिटिंग ऑफ दिस काइंड ऑफ डेटा टू मिनिमाइज एरर इन अवर रिसर्च. तो हम लोग एरर मिनिमाइज करने के लिए एडिटिंग करते हैं, डेटा की कोडिंग करते हैं फॉर एनालिसिस पर्पस. उन वेरिएबल्स को नॉमिनल, ऑर्डिनल और स्केल वेरिएबल्स में क्लासिफाई करते हैं. अवर डेटा कैन बी डिस्क्रिप्टिव, न्यूमेरिकल. उस डेटा को हम लोग टेबुलेट करते हैं, क्रॉस टेबुलेट करते हैं, टेबल्स बनाते हैं डेटा का, एंड वी शो देम इन द टेबल्स टू मेक मोर क्लियर इट टू द रीडर्स and for the analysis purpose. Then we present them into the graphs और charts. आपका डेटा किस टाइप का है, इसके बेस पे आपको चार्ट सिलेक्ट करना होता है. अगेन फ्रॉम दिस चार्ट्स आल्सो समटाइम्स द क्वेश्चन में भी आप बार चार्ट कब यूज किया जाता है, तो जब आपके डिस्क्रीट वेरिएबल्स हो, कैटेगरिकल डेटा हो, देन बार चार्ट. जब आपको प्रोपोर्शन बताना है किसी न्यूमेरिकल एलिमेंट का, तो आप पाई चार्ट यूज करते हो. आप लाइन चार्ट कब यूज करते हो, जब आपको रिलेशनशिप शो करने हैं, दो या दो से ज्यादा न्यूमेरिक वेरिएबल है, उनके बीच में एक रिलेशनशिप, you use the line chart. Then there are histograms are there which are used to show the frequency of a discrete and continuous data. Then there are these are the multivariate charts that we are not going to discuss here. Yes, you can definitely read out it. Let's move with the taste. हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, टेबुलेट कर लिया, कोड कर लिया, उनके स्केल आइडेंटिफाई कर लिए. नाउ वी नीड टू गो फॉर द टेस्ट. The taste can be classified into two parts. One is parametric taste and another is non-parametric taste. Parametric taste assume करता है कि आपका डेटा जो है it is normally distributed. Your data is normally distributed, and then we call it parametric taste. Bell-shaped curve होता है, Gaussian distribution होता है, so we use parametric taste. जब डिस्ट्रीब्यूशन फ्री डेटा होता है, जब हमें कोई भी टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन की कोई एजम्पशन नहीं है, देन वी कॉल इट नॉन पैरामेट्रिक केस. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम नहीं किया जाता है किसी भी तरह का, वी कॉल इट डिस्ट्रीब्यूशन फ्री केस. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आल्सो आस्क्ड दैट हाउ व्हाट डू यू मीन बाय द डिस्ट्रीब्यूशन फ्री केस. सो नॉन पैरामेट्रिक केस, बट यस इट इज इजी. दे विल आस्क यू इन दिस वे that which of the following is distribution free test. They will give you the option number 1 independent sample t test, option number 2 paired sample t test, option number 3 one way ANOVA, option number 4 critical knowledge. So obviously the distribution free test, not the non parametric test, is critical knowledge. Now let's discuss some parametric and non-parametric tests which are used to analyze the data. सबसे पहले there is a correlation and chi-square. Correlation and chi-square. Okay. किसी भी दो वेरिएबल के बीच में हमें रिलेशनशिप या एसोसिएशन चेक करना है,
So we use correlation or chi-square. Obviously, correlation is a parametric case, normal distribution as well. Chi-square is a non-parametric case, normal distribution is not as well. Secondly, जब हमें दो populations के when we need to compare the means of two populations, दो populations के means compare करने हैं, we need to see whether the population of these two means are similar or not, are equal or not. So we are going to use independent sample t-test in parametric and Mann-Whitney u-test in the non-parametric. अगर दो से ज्यादा ग्रुप को कंपेयर करना है, हियर दो ग्रुप को कंपेयर करना है, दो ग्रुप के मीन्स कंपेयर करना है, सो मैन विथनी एंड इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। अगर दो से ज्यादा ग्रुप को कंपेयर करना है, दो से ज्यादा ग्रुप के मीन्स को कंपेयर करना है, दैट वेदर दे आर इक्वल और नॉट, वी आर गोइंग टू यूज वन वे अनोवा एंड क्रिस्टल वॉलिस। देन द नेक्स्ट इज जब हमें बिफोर एंड आफ्टर सिचुएशन आइडेंटिफाई करनी है, वी नीड टू चेक that the students marks before coaching. Let's see, coaching is given to students, we can say coaching or the training to salesman, whatever. There is certain event, कोई भी एक ऐसा event है, phenomena है, कोई activity है जिसके पहले before is something that, and then there is after there is something. So before and after is there is significant impact or difference. पहले जो था उससे क्या ज्यादा डिफरेंस आया है आफ्टर में, पहले जो स्कोर था क्या उससे कम हुआ है या उससे बढ़ा है. If we need to test this, if we need to test this statistically, we are going to use paired sample test in parametric as a parametric test, and non-parametric test we are going to use Wilcoxon sign trend test. So these are the basic tests. There are so many tests, but these are the basic statistical tests which are used to analyze the data. Again, there is a regression. Regression is your the main linear regression and multiple regression. They are your parametric tests. Yes, there are non-parametric or categorical based tests also. You can go with the regression when your sample or your values are distribution. There is no normal distribution. Let's move to the next topic, that is statistical softwares which are used in research for data analysis. So इसमें से कुछ क्वेश्चंस आई आइडेंटिफाई जो जीसेट में भी और नेट की एग्जाम में भी पूछे गए थे. बेसिकली आई थिंक these words are new to the students of master degree or net aspirants, but if you have a basic knowledge of these software, then this may help you in getting marks in your exam. So let's see what is SPSS. These all are statistical software which are used for data analysis. SPSS is specialized or suitable or used in survey analysis. जब आपको सर्वे डेटा एनालाइज करना हो तो SPSS की स्पेशलिटी है. SPSS में और बहुत कुछ है. There are so many add-on modules, but basically it is survey analysis. eViews is a software जिसका यूज टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए किया जाता है. स्मार्ट PLS इज अ सॉफ्टवेयर जिसका यूज स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग के लिए किया जाता है. कोवेरिएंस बेस्ड PLS से और PLS बेस्ड इनकी स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग के लिए यूज विद स्मार्ट PLS. SPSS AMOS, अच्छा, दिस इज द एड ऑन ऑफ SPSS, अनदर सॉफ्टवेयर जो कि एड ऑन मॉड्यूल है. अगेन इट इज फॉर द सेम स्ट्रक्चरल इक्वेशनल मॉडलिंग के लिए यूज किया जाता है. स्टेटा इज अ स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर पैकेज which is specialized. No, there are again स्टेटा में बहुत कुछ एनालाइज किया जा सकता है. There are so many tests, but it is specialized in panel data analysis. इसकी suitability और usefulness panel data analysis के लिए ज्यादा है. क्वालिटेटिव डेटा आपको एनालाइज करना है तो क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के लिए वन ऑफ द पॉपुलर सॉफ्टवेयर इज NBO. देन देयर इज अ सेज. सेज जनरली बिजनेस में यूज होता है, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड प्रेडिक्टिव एनालिसिस के लिए. एंड देन देयर इज आर प्रोग्रामिंग, आर स्टूडियो. आर सॉफ्टवेयर इज हैविंग वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स लाइब्रेरी. इसमें बहुत कुछ आप कर सकते हो. दिस एवरीथिंग, ये सारा का सारा डेटा एनालिसिस यू कैन डू इन आर.
So R is having all kind of data analysis based, statistics based libraries which you can install and you can run. So these are the statistical softwares. देन ये स्टैटिस्टिकल टेस्ट तो हमने कर दिए, टेस्ट करने के बाद जो कंक्लूड करना है that is depending upon null hypothesis and alternative hypothesis. Let's see here. Conclusion from statistical analysis is written here, and whether the nature of these are true. Let's see. So first, null hypothesis is true. When the null hypothesis is true and conclusion is we accepted the null hypothesis, it is a correct conclusion. But when the null hypothesis is true and we reject it, then there is an error. We call it type 1 error. We reject a true null hypothesis. That's why it's an error. Secondly, null hypothesis is false. Let's assume the null hypothesis is false and we accept the null hypothesis. Null hypothesis was false and we accepted it, then the type 2 error occurs. And if the null hypothesis is false and we reject it, we are going to be the correct conclusion. So statistical test apply करने के बाद, after applying the statistical test, we are going to conclude on the basis of testing hypothesis. Okay, writing research report, I am not going into the detail. You can study out the format, which is a standardized, uniform format for writing a research report. I think time is more than 1 hour is gone, but yes, Zala sir, can I continue for 2 minutes? Okay, yes, please. Okay, so let me discuss a few important things with you. We are not going to go into this referencing style. You can go with this. Yes, these are the more software for referencing. EndNote you can use in Progress reference work. This is also the software for referencing and citation. Then let's discuss some ethical issues for researchers. The key terms which are related to the ethical issues for the researcher. The first is fabricating behavior. Fabricating behavior means पूरा का पूरा गलत डेटा, spurious डेटा क्रिएट करना और उसे रिकॉर्ड करना और उस गलत डेटा, spurious डेटा रिकॉर्ड करके, क्रिएट करके उसके ऊपर से एक इंफरेंस ड्रॉ करना, रिजल्ट देना, कंक्लूड करना. So this is a fabricating behavior. This is totally unethical. It is not accepted from the researcher. Second is falsification. आपने डेटा कलेक्ट किया बट नाउ यू आर गोइंग टू मैनिपुलेट द डेटा. आप आपके जो मटेरियल है, आपके जो इक्विपमेंट है, आपकी जो प्रोसेस है, इसमें कुछ मैनिपुलेशन करते हो, कुछ गलत चीजें करते हो. यू आर डूइंग सम फॉल्सिफिकेशन थिंग. आपने कुछ चीजें हटा दी. व्हेन यू आर गेटिंग द रिजल्ट, आपने कुछ रिजल्ट हटा दिए दैट दिस आर नॉट इम्पोर्टेंट. So this is not the right way. This is the falsification. This is not ethical. So not accurately representing data, this is part of falsification. Then plagiarism. Plagiarism is an act of appropriating somebody else idea. किसी और का आइडिया था, किसी और के थॉट्स थे, किसी और ने बनाई हुई पिक्चर्स थी, थियरीज थी, वर्ड्स थे, कुछ स्टोरीज थी जो किसी और की थी, और आप बता रहे हो कि दिस इज माइन, दिस इज माई ओन. So this is called plagiarism and this is punishable. This is crime. I must say plagiarism is a crime, is a punishable crime. Plagiarism is both an illegal and punishable act. So there should not be any kind of plagiarism in your research. इंट्राकॉर्पोरल प्लेगरिज्म होता है जब सेम सबमिशन में आप और आपके कलीग्स और आपके साथ वाले लोगों ने जो सबमिशन किए हैं, आपने उसमें से कुछ चीजें कॉपी की है, उठाई है और आपने लिखी है. दैट इज इंट्राकॉर्पोरल प्लेगरिज्म. एक्स्ट्रा कॉर्पोरल प्लेगरिज्म, दैट आपने किसी एक्सटर्नल सोर्सेज से, इंटरनेट से या बुक से डेटा लिया है. दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल एक्स्ट्रा कॉर्पोरल प्लेगरिज्म. ऑटो प्लेगरिज्म मीन्स आपने अपना ही वर्क प्लेगराइज किया है. आपने पहले कभी कुछ काम किया था, आपने अगेन सेम वर्क आपने लिखा है आपके प्रेजेंट रिसर्च वर्क में विदाउट साइटिंग योरसेल्फ, अपने आप को साइट किए बिना, एक्नॉलेज किए बिना. देन वी कॉल इट ऑटो प्लेगरिज्म. देन देयर इज
ओके, प्लेगरिज्म चेकिंग के लिए भी देयर आर सर्टेन सॉफ्टवेयर, टर्निटिन एंड उर्कुल, दीज आर द पॉपुलर सॉफ्टवेयर which are used for checking plagiarism. Then मल्टीपल ऑथरशिप करना, घोस्ट ऑथर्स लेके आना, ऑथरशिप गिफ्ट करना, दीज आर अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन रिसर्च। विदाउट पीयर रिव्यू आप कोई पेपर पब्लिश करते हो, आर्टिकल लिखते हो, देन अगेन इट इज अनएथिकल। इट शुड बी पीयर रिव्यूड एंड इट शुड बी ब्लाइंड पीयर रिव्यू। जब ऑथर का कंटेंट, ऑथर का रिसर्च रिव्यूअर के पास जाता है, then reviewer should not know the author, who is the author. It should be blind. So blind peer review process should be followed. It is an ethical practice, otherwise it is unethical. And किसी भी चीज को वापस पब्लिश करना, डुप्लीकेट पब्लिकेशन करना, पार्शियल पब्लिकेशन जनरली स्टूडेंट डू। आप अपनी थीसिस में से कुछ रिसर्च पेपर पब्लिश करते हो, so it is a duplicate, partial duplicate publication. It is not ethical. We are not going to discuss this right now more. Okay. Okay, so we are up to this. These are again these software that we have discussed earlier. Again, I repeat, SPSS for survey analysis, NVO, qualitative data analysis, MO, structural equation modeling, e-views, time series data analysis, SAS, business intelligence and predictive analysis. R में तो आप you can do each and everything. Then SCADA is for panel data analysis. It is specialized, suitable for panel data analysis. Mendeley.io सोर्सेज कलेक्ट करने, साइट करने, रेफरेंस करने और सोर्सेज को मैनेज करने के लिए यूज किए जाते हैं। देन स्मार्ट पीएलएस इज फॉर अगेन स्ट्रक्चरल इक्वेशनल मॉडलिंग, उर्कुल एंड टर्निटिन फॉर द checking plagiarism. So we are ending our today's session here. Yes. The rest of the things, काफी चीजें we haven't discussed. So I am going to share the PPT with the sir, and sir is definitely going to share it with all of you. So thank you so much for today's session. થેન્ક યુ શર્માજી. સંશોધનના સંદર્ભમાં મને લાગે 2.5-3 કલાકનું વ્યાખ્યાન કરીએ તો પણ સમય ઓછો પડે એટલી બધી પીપીટીઓ આપણી પાસે હતી. પણ સમય મર્યાદાને ધ્યાનમાં રાખી અને આપણે કેટલાક સમયની અંદર પૂર્ણ કરવાનું થાય અને એમાં મહત્વના બેઝિક સંશોધન એટલે શું, કારણ કે મોટાભાગે નેટ સ્લેટમાં આ સંદર્ભમાં જ પ્રશ્નો આવે છે. સંશોધન પ્રશ્નોની ઘડતર કઈ રીતે થાય છે, સંશોધનના સ્ટેપ જુદા જુદા, એમાં ટાઈપ ડિઝાઇન, સંશોધનની ડિઝાઇન કયા પ્રકારની હોય છે, કઈ સંશોધન ડિઝાઇનનો ક્યારે ઉપયોગ કરી શકાય. એ જ રીતે સૌથી મહત્વની વસ્તુ છે ડેટા કલેક્શન. ડેટા કલેક્શનમાં સેમ્પલિંગ. અવારનવાર નેટ અને સ્ટેટમાં પ્રશ્નો આવી શકે કે કયા પ્રકારની સેમ્પલિંગ મેથડ કયા પ્રકારના સંશોધનમાં ઉપયોગ કરી શકાય. આ બધા જે બેઝિક પ્રશ્નો હતા એને આપ કર્યું, ખાસ કરીને ડેટા એનાલિસિસ. અને લાસ્ટમાં જે સ્ટેટિસ્ટિકલ સોફ્ટવેરની આપણે વાત કરી, એસએસઆઈપી વગેરે, આના પણ દર વખતે 1-2 પ્રશ્નો હોય છે કે એસએસઆઈપીનો કેના માટે ઉપયોગ થાય છે, સ્ટેટાનો કોના માટે ઉપયોગ થાય છે. એ સંદર્ભમાં આપણે પ્રશિક્ષણના વિદ્યાર્થીઓને ખૂબ સરસ માહિતી પૂરી પાડી. એ બદલ આપનો આભાર. પ્રત્યેક વખતની જેમ ખરેખર આપણી પાસે સાહિત્ય અને એ ઘણું બધું વધારે હતું, પણ સમય મર્યાદામાં આપણે પૂર્ણ કરવાનો હોય ત્યારે ગાગરમાં સાગરની માફક આપણે આ વાત અહીંયા સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો. એ બદલ ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા વિશ્વવિદ્યાલય જૂનાગઢના સમાજશાસ્ત્ર વિભાગ વતી અને પ્રશિક્ષણના તમામ સહભાગીઓ વતી હું આપનો આભાર માનું છું. અને આગળ જતાં હજુ એક્ઝામની ડેટ નક્કી નથી. જો કોઈ એક નવો આ જ પેપરના લગતા કોઈ નવા ટોપિકમાં અથવા તો આમાં જે કંઈ પણ રહી ગયું છે ને આપણને એવું લાગે કે એક્ઝામમાં વિદ્યાર્થીઓ માટે ઉપયોગી છે, તો પુનઃ આપનું એક વ્યાખ્યાન અમે ગોઠવશું અને આપ આ જ પ્રકારે અમને મદદરૂપ કરતા રહેશો એવી અપેક્ષા સહ આજનું સેશન આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ. થેન્ક યુ સર.